بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ایف بی آر کو دعوت دی ہے. ہم اب کیونکہ کافی وقت پہلے ہی ضائع کر چکے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ویل اسٹارٹ ود اے شارٹ پریزنٹیشن. علی جان احمد اینڈ شکیل صاحب ایسے علی صاحب وڈ اسٹارٹ ود اے پریزنٹیشن اور پھر کویسچن آنسر میں ویل آل بی ٹوگیدر. تھینک یو. On behalf of FBR, thank you very much for inviting us. And is always a difficult position to be in if you are representing an organization which is as unpopular as FBR, because by definition the basic function remains the tax collection is not a very easy job. So I am trying to make it slightly easy for everyone so that we can set the context and we can take you through the journey and the efforts that we are doing. So to start with, the first important things remain, and everyone sitting here will always have some sort of views about the taxation rates. And we do recognize that our taxation rates are on the higher side. But on an equilibrium, when we compare the taxation rates, there has to be a balancing act. Whether the taxation rates are low or high, it essentially depends upon the compliance rate. For the economies where compliance is higher, naturally those economies can afford to have lower taxation rates. But in Pakistan, due to presence of a large informal sector, similarly there are many businesses, those are outside the taxation net or part of a semi-taxation net structure, which actually place them in a more advantageous position. So the bottom line remains, if somehow we are able to improve the compliance, ultimately the tax rates will go down and the entire economy will benefit. So it's a egg and chicken problem, a catch-22 situation for everyone sitting on this side as well as sitting in the audience. So we are trying to resolve. Now a natural question would be, given the emphasis that FBR places on compliance rate, is it a well-placed place that we claim that the compliance is not very high? So I'll try to show this with the two cases, point-in cases, while you can go through this particular slide in details. But the essence of this slide remains that if we talk about the working population of Pakistan, which is close to 67 million, the entire labor force, those that is implied or is available in the market. So top 1%, it is essentially the case for top 5% in general and top 1% in particular, because the people who are down below this particular tree remains either below taxable limits or at the subsistence living, so they are not the true case for getting the tax collection. And whether they are submitting their tax returns or not, this particular area shows where in each bracket we have got top 1%, we have overall got 670,000 people in that. So around 200,000 people are actually submitting their tax returns and 400,000 are not submitting their tax returns. Now it is partly true, but the fact remains that some of the people are submitting their tax returns, not showing them to be at top of the ladder. Rather, they are underreporting their income. So this remains an important paradox for FBR, that how can we identify that, number one, all the people submit their tax returns and whoever is submitting their tax return is submitting at the right level. And we do recognize that whenever somebody is earning income, there are 2-3 common areas where they will be spending the income. Either it will be property, it will be vehicles or those things. So if we go to next slide, we will see this shows data from our actual tax returns. So we have tried to draw data of the property cases where property worth, the bottom row is property worth 10 million and above, because it is quite possible a small flat or a small 5-marla plot will be falling in upper two categories. So these are relatively the haves that we are talking about. So if we take, for example, the last 2024 data, we would see that 46,000 people have purchased property worth 10 million or above, which is a sizable number. There will be 100 million worth property, a billion worth property, but minimum of 10 million. And this is a very small number in terms of overall transaction. Only 2.7% of the total transactions fall in this category.
82% of them are already tax filer. So that remains an important point for us, that the people who are purchasing property remain a part of our tax net. But it is quite possible that they are not declaring their income. Or Ali, so these are the people who bought a property. We have the record of that. Their CNIC is there. And general perception is that these people, are just not filing. 82% of actually they are filing. But all of these cases, they did not declare this particular property in their income tax return. Despite filing income tax return, despite paying in advance income tax on that, whenever the property was registered, these are those cases who did not declare this property in income tax return. So that is a case where this top 1% is continuing to have a lifestyle, including buying property or owning vehicles, but not declaring in the tax return. So this is a case of not declaring, but under declaration that we were talking about, that top 1%. Yeah. So after establishing this particular point of issue of compliance, now we do recognize, if we compare our taxation rates, this slide on the left side shows taxation rates of Pakistan, and we see that income tax is, including super tax, is abnormally high when we compare it with the other countries of the region. The sales tax either is competitive or slightly on the higher side. Similarly, tariffs, same point in case. So if we compare with three countries, with India, with Bangladesh, and with Malaysia, we do recognize. But the basic point from which FBR started was that we all are here with our intention of reducing these tax rates, but correspondingly, we need to improve compliance. And in case we are able to improve compliance, ultimately, these taxation rates or the tax rates or tariffs can go down. And all our efforts, whatever I'll try to elaborate in terms of interventions, are actually focused on improving compliance. So before I go to improving compliance, there are two common myths that we want to point out. The first remains, as Chairman Saab has just pointed out, that top 5% or top 1% people are not filing tax returns. Probably this is a myth, and we think that the data shows that most of them, up to 80% at least, are already filing taxes, but actually they are not declaring their income. Either they are not declaring the property, or there is not sufficient, and what we call them as impossible returns. A very simple Excel-based analysis can establish in a minute and throw out currently data of 20,000 people, 50,000 people, which are having impossible return. And the second myth, which will be, I think, a very popular myth in this particular audience when we talk about broadening of tax base argument versus deepening of tax base argument. The bottom line remains, generally everybody say that yes, we shall broaden our tax base, we agree. But it is equally important that we need to deepen our tax base as well. Because we see that this entire 95% of the people or population is in the bus. There are two people. A few, those are on the top of the bus, needs to be actually behind the bus and pushing it. And similarly, some of the people who are pushing it are not asserting their best of efforts. So actually, we need to have both these corrections in our economy, in our taxation structure, where we need to bring the top men pushing the bus as well as everybody trying their best to. And when we achieve this objective, obviously, ultimate target, and with the intention here is to come and present to you possible interventions that are improving compliance and submit to you and get your suggestions on how to reduce taxation. And we'll also be showing you the specific tax lines currently we are working on. And obviously, when we talk of certain relief, there are corresponding tax implications for us, the revenue shortfall implication for us, and we'll also be looking for your suggestion in coming up and overcoming that particular tax shortfall. So the second R transformation, while I have tried to establish on behalf of FBR case that we need to improve our compliance to lower the tax rates. Now what we are doing to improve our compliance,
as I'll say this particular slide will show that probably FBR is one of the most reformed organization in the history of Pakistan, as we also claim that is one of the most digital public sector organization. If we look at this system over last 25 years, last 35 years, we have seen a lot of interventions have taken place, a lot of structural reforms have taken place. But the bottom line shows, which is the FBR tax to GDP ratio, we see that there hasn't been a large then. There has been a very small gradual increase. We have tried to introduce the universal assessment scheme. There was World Bank taxation reform and administration project. We have also doubled some of the salaries of the FBR officers, implementation of digital IRS, launch of VBOC, IRS portal, and all these things have been there. Exemptions removal have been because there was a general view that X percentage of economy is outside the taxation net in terms of exemption of some very important stakeholders remains. And then the establishment of the PSW, PRAL, all these have been part of this reform efforts. But before I go to the intervention, the last bottom shows that the real dent, at least we claim that in the last 1 year has been where 1.5% of tax to GDP ratio in a single 150 basis points in 1 year is not something easy that we could achieve. And why all these reforms were essential when this current government took office in the year of 2024, because the current taxation structure, the current tax rate is not sustainable. Ultimately, if you want the economy to grow, you have to bring the taxation structure, make it more rational, make it more equitable as well. So all these are important consideration. Second is, whenever we talk and enter into any donor-driven program, be it IMF or others, the simplest recipe is to increase the tax rate, which is not the right solution. This has its direct implication on the economic growth. Similarly, we have failed to address the integrity of FBR officers. It's very common and popular narrative that prevails. I don't say whether this is correct or not, but nevertheless, there are serious issues about in terms of governance and integrity, and we'll try to see that what we have achieved that. And then obviously, FBR is more considered as a tax extracting authority rather than an authority that is facilitating the economic growth and becomes the catalyst in that. And we do recognize, all of us who believe in Keynesian economics, that nevertheless, our taxation policy from G&T remains a very important component of in terms of its multiplier effect. So this is our achievement of the last 1 year. We have seen, because 2015-16 is the base year of Pakistan's economy, we have tried to plot that tax to GDP ratio. It has remained 9%, 9.5%. Then due to COVID, there was fall. And then obviously, in the last 1 year, we have tried to improve the tax to GDP ratio, both for two reasons. One, there have been some policy measures, and we do recognize that some of the policy measures were a bit more stringent. And then simultaneously with the collaboration, with the cooperation, with the digital interventions, we have also been able to improve the compliance component. That remains a essential, necessary condition for improving the economy. How did we all do this? So the basic point was, this current FBR transformation plan is an indigenous plan. We try to bring best and most competent human resource of FBR, those who were not senior most people, essentially might be 5 to 7 years, 10 years of experience, foreign graduates who had the understanding of the knowledge as well as the international best practices. So virtually we locked them in a room and we asked them, they had the access to all external resources, the businessmen, all those stakeholders, the kind of technical knowledge, the business knowledge that we needed, the taxation knowledge, the digital knowledge, and they tried to came up with a holistic approach of people, process, and technology, all those interventions. And then afterwards, we took it to the Prime Minister, we took it to the Cabinet. The Prime Minister also constituted smaller Cabinet committees who thoroughly deliberated this, and ultimately, in a span of 8 to 10 weeks, the entire plan was approved. And ever since, there have been complete ownership of the Prime Minister, the Cabinet, and all stakeholders. Prime Minister effectively takes a weekly meeting on the transformation plan and the progress that we have
made on all these things. We have also, in order to implement all these reforms, we have also established a delivery unit, which means the internal FBR officers, apart from all technical assistance support that was available, we have brought them in, offered them very special incentives, a very different work culture in which there is no peon, in which there is no cubicles. They all sit in one room and they do the design part of reforms. Then once it is approved by the competent authorities, then implementation takes place. And if there are certain implementation gaps, this is again sent to the delivery unit. And if any one of you happen to visit FBR, if you come across a young, bright face with bright eyes, you can definitely say that he or she is part of our delivery unit team. So how this is different from our traditional? Because this is demand driven, this is internal driven. It is not that the money was placed on the table and ADB or World Bank or IMF asked us to move towards that. No, we decided that we shall do this. Similarly, this is in line with the government priorities, owned at the highest level, and then obviously we take a lot of pride of this being in a homegrown plan. What are those interventions? So we have tried to categorize the interventions into people, process, and technology. As the finance minister, this is his favorite framework of PPT. So in terms of people, we have brought the high-powered incentive. We'll try to cover most essential of it while we go through. On technology, digitalization remains a core. Production monitoring remains an important component. So all these things are part of our entire plan. So to start with, how can we ensure that FBR officers are actually working for the common objective of application, fair application of taxation law and not essentially achieving their targets? So for this, we have tried to come up with a high-powered incentive regimes, for which is what we call as the RRS, and this is fully digital, and all IRS officer and custom officers are part of it. We want to change their behavior. We want to ensure that particularly those who are junior and mid-level officer, they do see light at end of the tunnel, that if we are known as honest officer, neat, clean, competent officers, we will be rewarded. We have already rolled it out. 2 rounds have taken place. And from where the issue started, we all know, all of us, everybody who is sitting here has an interaction with a tax officer in their life. So these are the results of our traditional PER system, that overall grading, our performance evaluation reports or ACR, you can see that these are the actual results. 58% of FBR comprises outstanding officers and another 39% comprises very good officer. So if a private sector organization can have this composition, they would be definitely competing Bill Gates and everybody else. So FBR actual on record has this sort. It is not fault of any individual. All our other government departments would have similar sort of results for this. So FBR is not standing out. All other government, this system is not working. So this is at the heart of the problem. You know, eventually these are the tax managers and custom officers who are managing it. And across civil services in other departments, and all of you have seen, met them, interacted with them. The problem is that the only instrument that measures their performance is so flawed. So you cannot run an efficient civil service with such a flawed instrument. So this basically is saying that 99% of FBR officers, this is true of PS officers, ACRs, this is true of police officers, ACRs, and this is true of any other service cadre. The 99% are either very good or excellent. This is current system of recording the performance. If that were true, we wouldn't be where we are. So essentially what we did was we tried to change this. This is fundamental reform to change the subculture of performance management for our own tax managers and custom service officers. And Ali would explain how we've attempted that. We have actually done something very radical, which, and there was a lot of resistance around it. And let's see how it has worked out and how it has played. Yeah. So this was overall grading, and we do recognize that overall performance is one thing and integrity and honesty is another thing. So on honesty, while there were 97% on this overall grading, on honesty there were 99% honest officers. So that was even more interesting and important to have it.
So the core system that we were having, we need to fix it. And we try to fix it through our entire effort, and we try to go slightly out of the box. So before going into the system, what are the results of the new system? I have shown the results of the old system. The new system will be has recorded them because we have run 2 rounds, and it's an institutional documented memory that is available. So we can see that it's a bell curve. So A, again, this is a relative ranking. I don't pass a judgment. So 20% are on the best. Then B, which is the, say, very good. C is the average, and D and E. So it's a bell curve, 20% following in each category. Now, how does this system work? So this system works, one, completely digitalized. Secondly, completely anonymous. वो जैसे हम सरकार में कहते हैं ना कि सरकार में आंख की शर्म हया बहुत होती है. Somebody has worked with me, I have worked with somebody. If I go with my ACR, invariably, or I text him or her, invariably he will be considered while writing the ACR. So this is completely anonymous. And third, it's a forced ranking. While the private sector is very well aware of the forced ranking mechanism, it's implemented. Even in armed forces, forced ranking mechanism is implemented. But for government, traditionally, it's not something very common. So we have tried to come up with a forced ranking mechanism where you are forced to rank 20% into A, 20% into B. And it's not only about the integrity or the honesty, it's also about the quality of the work. For IRS officer, it's much easier because of the assessment orders they pass. And in case we don't have a document based upon which we can pass the judgment, then obviously there is a second peer rating. So all this has been codified into a system. And then this system has been linked with a very powerful incentive regime. And here we say that can you talk about peer rating in that? Yeah. How it operates? Yeah, sorry. So how do people rate? So if I am being ranked, depending upon an digital algorithm, my batchmates, the officers with whom I have worked, they may be junior to me, they may be senior to me, my tax office, and all these things. So there is a well-defined algorithm that is there, and based upon that, I am sent a system. So, for example, if on 28th of November, there will be an email be generated that today or tomorrow from 9 a.m. to 11 a.m., nobody will do anything else. Just sit on your computer. They will not know until they get the link. They will not know the person they are rating. And then obviously 45 people. Basic insight. Tax, the world might not know, or the society might know. The government might not know what kind of officers we are, but our colleagues know what kind of officers we are. So essentially we're trying to document the knowledge that was tacit into some codified form. So 45 peers rate each officer. And these 45 are selected from amongst those who are likely to have known your work and your reputation. So both are then codified, and then eventually results come in. And to the level, the trust, giving the officers trust that their identity will never be revealed. The moment the process is completed, say at 11 a.m., the results remain there, but the rater's name is automatically deleted from the system. And we have got this externally verified through the audit, because otherwise it can be fatal if somebody knows that what I have rated him or what I have been rated. So this has been linked with a very powerful incentive regime, which means that if I am an assistant commissioner and my salary is, say, 100,000, will be to the tune of 100,000. If I am categorized as A, on a quarterly basis, I will be getting 4 times the salary. So I'll be getting 400,000 instead of 100,000 if I am rated as A. And if I am, and although this will be paid on a quarterly basis. So for 300,000, which means 900,000 after a quarter, but effectively I am getting 4 times the salary, whereas nobody will be getting any additional compensation if he is being rated as the bottom 20%. So the challenge was we had to come up with an incentive regime that any other government department could go to the government and say that offer us this, because we see that there is an executive allowance, there are other things. So effectively double the salary some of the departments already have, but we have gone to the government with a package that if any other government organization
wants to adopt it, government will not have any problem because it is cost neutral for them so far as you are offering some extra incentives. So this is, and this remains a case study for others, because in private sector, perhaps 20% of the compensation, 30% of the compensations will be linked, but 4 times compensations is something not very common. So there is a short video, I'm not, if we can display that, on the ease of the system. It's a 1-minute video. Basically saying the whole system is digitized, it's anonymous, it's secure, and so, you know, the people are not afraid of that. And this video essentially shows how you actually operate it. Yeah. And so, while this system was originally designed for reward and rating system, we have tried to use this for the governance improvement as well. It's a collateral benefit of the entire system because a person is being rated comprehensively. We have tried to identify various key positions, which means that in case of customs, we do recognize that all positions are not key positions. So there are 21 key positions in the customs and 108 key positions in the IRS. Essentially, all LTOs, chief commissioners, and commissioners of the LTOs, CTOs, all are falling in this category. So the next slide shows the results of this exercise. We have tried to see actual manning of these positions, these key critical positions, in case of IRS and in case of customs. In July 2023, which means say 2.5 years before, 26% of the officers were either A or B, while 3/4 of the officers were from the lower categories. And as a result of active effort, this is only a tool, RRS is only a tool, as a result of effective governance efforts, we see that only 11% are there, those are with shaded kind of reputation. I'll use the word shaded reputation, and Chairman Sahab will say that we don't have more A or B. Yeah, so essentially what we're saying is that a system which was essentially not based on any data, and you know, it was only the whim of the chairman or the minister or somebody else, while making these important positions of placement of people, say putting people as Chief Collector Karachi or Collector South, or you know, the Chief Commissioner LTO or Commissioner LTO. These are important decision-making points, you know, are the nodal points from where the whole subculture of the organization is driven. And that subculture was compromised, let's admit that. So that compromise was based on how you were positioning people. So if you're positioning tainted, these yellow is the color, no? Yeah. So yellow is like CDE. If you're putting yellow people to man most of your position, your subculture can't be good. So this is a snap, this is actual posting profile in say 2023 versus 2025. So green has just moved up. So, you know, but Ali is referring to, somebody can say why there's still some yellow, because I don't have enough green. So if I have enough green, there wouldn't be any space for yellow. And in case of custom, we can see from say 71%, we have reduced it to only 6%, and 6 in 20 odd position is maybe 1 position. Now coming towards the process, I'll try to expedite because I recognize that most of you will be interested in the tax rate reduction component, which the chairman will be actually presenting. So before that, let's see what other things we are doing in compliance, but I'll be slightly quick. These are some of the entities we have tried to, on custom sides, we have tried to address the challenge of smuggling as well as cross-border trade, which means the legitimate trade that is coming in. Single enforcement entity has been established. PUL remains one of close to 300 billion tax gap. So PUL remains an important area for us. Digital key is being introduced, and on the cross-border trade, faceless custom remains an important intervention. Again, a digital
intervention. Then similarly, RIAC, scanners, all these are being placed. And just a quick thing on faceless customs. We do recognize that there were custom appraiser, one of very either notorious or important pillar of the trade for assessment, appraisement purposes. So these were separate collectorates. So everybody had an idea of, if I am importing a particular commodity, to whom it will be marked. These will be 3 or 4 people because of the sectoral experts and because of geographical distribution. So we have tried to break that sort of geography as well as sectors. So we have, all Pakistan is now one sort of appraisement unit. There is no bifurcation either geographically or in terms of sectoral. We are also in the process of setting up a central appraisement unit, which will even bring more high degree of HR. Will be setting that up centrally. So digital system remains an important area. All this environment is sanitized. If I enter the hall, I cannot carry my mobile phone. If I raise a query, the system will not be marked to me again. So we have tried to make it as close to a call center system with the right kind of technical HR as it can be. There are double shifts, those are also taking place. Similarly, the perception has been largely good. All those who are part of formal sector do recognize that. And we have seen that there has been increase of revenue per GD. And one of the reason for increase in revenue per GD is because all the legitimate traders and everybody knows that now they will not be able to get through some other sources. So there is an So essentially, there was a collusion between appraiser and the importer. The method to communicate has been broken, so collusion has been broken. Yeah. So we take this as acknowledgement of our efforts, particularly on faceless. So there has been, we can see these are other slides. Obviously, we'll be sharing our version of it with you, so you can see the improvements in terms of revenue. All the chambers have already recognized this effort as well. So we are also grateful for the support to this very important initiative. Now coming towards the technology part. So in case of other technology related interventions, I think we started with the compliance level and the informal sector of the economy, and cash economy remains a very important component. We see, if we compare Pakistan with our counterparts, there is a very high cash in circulation. So this requires some measures, those are not traditionally there. Some of them are traditionally there, and one of them is digital invoicing. Digital invoicing obviously is an intervention where all B2B transactions are recorded. So we can see, and we are grateful for the support that we have actually got from the business community in this. We have seen other countries have taken much longer time, but Pakistan is all set to do it in 12 months cycle, which is a great achievement within ourselves. And we have seen that we have a kind of phasing of it, where we have first focused on big public limited companies with turnover over 1 billion and similarly going down. So the sequencing has been quite, I think, aggressive, and we have got a lot of cooperation in this regard. And this shows that out of the overall, currently we see that close to 20,000 businesses have registered with us, and 5,000 are actually live. And obviously this constitute, once they are putting all their invoices on our system, this constitute around 58% of total reported sale. So this is a great achievement, and we are really grateful. So what are we essentially trying to do? We are saying, don't give us a sales tax return on a monthly basis, give us your invoice. So there is no need to file a separate sales tax return. And because buyer and seller both are filing it, so it is automatically, collated, corroborated, and the input tax adjustments, etc., all takes place. So this is what other countries have done it. We are now trying to do it. Challenging is the timeline that we have been given by the Prime Minister. But I think what other countries have done in 4, 5, or 7 years, in some cases like Turkey, we are confident that maybe, if not maybe in 18 months, we'll be able to do that. Sir, are you saying that sales tax return will not be filed? Monthly sales tax return will not be needed to be filed once digital invoicing is complete, yes.
once it's a compliant organization through a license integrator. So like I mentioned that in order to improve compliance, DI remains an important area of intervention, and most of taxation authorities are actually doing that. Another important area of, in that sense, when we talk about informal sectors, informal economy, remains the production counting. And here, FBR as a taxation authority is leading sort of digitalization simultaneously. So the production monitoring. So the traditional approach of saying that just go to the retail sector and then try to track back, it is quite possible that we start with the manufacturing sector because it's more formal, it's lesser units. And then if we start, because these all are basic manufacturing. Sugar being produced here will be used in other industries. So if we can have a fair estimate of the production of sugar or fertilizer or cement or tobacco or beverages or packaged milk or these all basic sector, which constitutes a large proportion of our manufacturing base, then and simultaneously digital invoicing is implemented. So all production that is taking place will be having a fair idea. Then this production will be matched with the digital invoicing. The background, the motivation for this is essentially our sales tax on goods, which is a federal subject here. In India, it's a provincial subject. Fetches roughly 3.1% of GDP in taxes in Pakistan. India, similar sales tax on goods fetches 6.5% of GDP with almost similar rate, 18-19%, you know. So what I'm telling you is there is a huge underreporting of production. Those who are from textile sector, they know about Golmaal, and those who are from sugar sector, they know much more, and those from cement sector also know a bit of that. So what we are trying to do is we are not saying that we are going to fight with our taxpayer, that your number is this or my number is this. A camera is put there, video analytics is put behind it, an AI system analyzes the data and throws up a reliable production number for how many bags of cement produced, how many bags of sugar produced. We have already implemented it in 2 sectors successfully. One is video analytics, one is sugar, and another is cement. And Ali probably show you some results of that and how that has affected. Now, last year, you know, the sugar crop was lower and sugar production was lower. Despite that, and accounting for the price differential from one year to another, we have received net higher, Ali, 40 billion in sales tax? 46 billion in case of sales tax? Product, yes, sir, and 19 billion in additional income tax. So roughly 74 billion of tax impact. This was the money that was being lost and not being collected because many of the sugar mills wouldn't report what they were producing. Likewise, in cement sector, we have four months data. You have cement sector? Yes, sir. I'll just show one video how does it operate so it's very simple. It's not very high technology. It's simply a camera and video analytics behind it. There isn't much expenditure either on this. If you put it on each assembly line, you are able to have a proper count. And also we are trying to de-link the sale price from declaration, and then, you know, the tax officer coming and say, no, with the price you're declaring for sale is not correct. We are mostly, wherever possible, we are using PBS data on retail and using a formula which we have agreed with the industry, say cement and sugar, to determine what is X mill price. So essentially there are 2 elements. It's the sale price and it's what is the total sale, you know. So if these 2 numbers are locked, rest of the sales tax calculation is simply an arithmetical function. So by deploying this and by using some reliable external data on prices, you are essentially getting out of the business of, you know, so you submit the return and I'll issue you 100 notices before I accept that. Yeah. So main challenge, as Chairman Sahab mentioned, was this has to be cheap so that industry can afford. This has to be non-intrusive because the assembly lines are too expensive that FBR places a system. It can't be part of the assembly line. It has to be an external item. So in case of cement and sugar, you have seen that these are video analytics camera. There is a complete dashboard that actually throws this, all the data. While we do have a video, but in fitness of time, I'll skip that. This is in the sugar sector. So, and again, as Chairman Sahab also mentioned that we are already realized. In case of beverages, because these are very high production lines, so we had to come up with a slightly more sophisticated barcode scanner type of solution. So we have come up with that, and we are in process of implementing same in textile and beverages. This is one slide on the POS
which is the retail level. And it remains very important because it is extremely important to distinguish between tier 1 sales versus tier 2 sales, because tier 1 are generally the places where all of the people who are sitting in this hall actually go. No, they don't go here, they go to Dubai. So maybe n minus one of the people sitting here go to tier 1 sales. So if we are able to capture that, then obviously apart from property, apart from vehicle, and apart from these spending patterns, we'll be able to see and we'll be able to tax them properly. We'll be able to have the government share that component of it without creating any noise, because tier 2 is the common man on the ordinary Karyana shop. If our solution is same for all shops, obviously there will be hue and cry. There is regressive taxation that they face. Now coming towards last part of my discussion is our effort to improve on compliance, which means that as already mentioned that property, vehicles, these remain important. These are the data sets, those are already available with us, withholding data of property, vehicle, bank deposits, PLRA, CDA, some of the data sets we are in process of integrating, FIA, the international traveling data, vehicle ownership data, SIN land record data. So this is the slide that I showed you earlier. We have done a similar analysis for the vehicles as well, and we can see again a very small percentage of people are there who actually have vehicles. So what we want to do, to start with, there is again, obviously, when we talk about the deepening of exercise, there is an equal emphasis on, in terms of compliance, in broadening of tax base. So this is our recipe, quick recipe that we intend to do, that anybody who has purchased a property, currently you can't purchase a property in Pakistan if you don't pay the withholding tax. You have to pay. So the CNIC based entry is available with us. So two type of people, either who have not declared them, they have paid the tax, they have not declared zero property in their return, or they don't have enough income to match that. So we'll start with these cases. Same is true for vehicles. And we have identified that the whatever data we currently possess, with focus on only 91,000 transactions, we can hit 1.2 trillion asset base. And the data that is being integrated, another 125,000 people. These are from the tax returns and the withholding data. This is not something we are extrapolating anything. We can hit another 1.8 trillion asset base. So we are talking of an asset base of 3 trillion with close to 200,000 people. So aspiration for the future is that our reform effort nevertheless remains focused on lowering taxes and improving tax to GDP ratio. We do recognize these are opposite goals. We are currently at 12.2% of tax to GDP ratio. We want to improve it to 18%, in which 3% will be through the provinces, 15% through FBR and PDL, the Petroleum Development Levy. Now, this is our aspiration. In order to achieve the economic growth, the facilitation component phase of FBR, it is important that we do reduce some taxation. These are broad ranges. These are our aspiration. We do reduce. So this is not just this is more than aspiration, because this is part of the roadmap that FBR has signed with the Prime Minister. And this is a multi-year roadmap in which you have to bring down taxes and you have to improve that tax GDP ratio, and there are concomitant interventions that are working behind it, some of which you have seen, some of which we did not go into detail, but there are like at least 20 to 25 serious fundamental interventions that we are undertaking to improve compliance rate and to improve our own, subculture in the organization, etc., and digitalization, etc. So essentially, what we are targeting is lowering the tax rates, and this is not a secret document, this is a roadmap document which is signed, which is reviewed every month. Of course, we couldn't do this financial year, but as we move on and compliance rate improves, this has to happen. So this slide shows, as Chairman Sahab has mentioned, some of the taxes that we want to reduce and some of the taxes that we want to eliminate even altogether. For example, super tax, surcharge taxes, tax on intercorporate dividends, WPPF, EOBI, Social Security contribution. Taxes that can be reduced includes reduction in sales tax rate, income tax rate for salaried, non-salaried, corporate, compulsory advance tax payment for exports. But the point remains, whatever proposition we come up with,
this will create a hole of 1.2 to 1.6 trillion, depending upon what percentages we finally agree. And improving compliance, when we started our argument of reducing tax rate, improving compliance remains essential. And here, the entire FPR is here with the request to support us achieve this objective, help us make a working group with us, nominate people, give us the support, the technical support that can identify and come up with a tax rate that on that Laffer curves actually have sort of the best value for money, best sort of economic return for the entire economy. I stop here and I leave rest of the discussion for the Q&A session. Thank you very much. इसकी किसी ने तस्वीर तो नहीं ली ना? पक्की बात है ना? अच्छा, सो बात ये है कि बड़ी सिंपल सी बात, कंप्लायंस रेट इंप्रूव किए बगैर, कंप्लायंस रेट इंप्रूव किए बगैर हम टैक्स रेट को कम करना तभी पॉसिबल होगा अगर हमें कोई एक्सटर्नल किस्म की टेम्परेरी सपोर्ट मिले, जिसकी भी पॉसिबिलिटी है, वो जीरो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट कंप्लायंस रेट में बहुत पोटेंशियल है। आप देखिए ना, हम पिछले साल 8.8% टैक्स FBR रेवेन्यू टू GDP रेशियो पे थे जून 24 में, और जून 25 में हम 10.33 के ऊपर थे। सो दिस इज 1 year. So if we really work hard, we all join hands, we can do that. And I tell you, इस कमरे में जो लोग बैठे हैं, almost all of them belong to compliant type. तो compliant type के साथ क्या हो रहा है? दो नुकसानात हो रहे हैं। एक तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, कुछ दूसरे जो नॉन कंप्लायंट लोग हैं, ऑफ कोर्स दे फेस कास्ट का वो जो टी की बात कर रहे थे, वही उनकी अवेलेबल। दूसरा, आपका शेयर कम हो रहा है। अगर ये कंप्लायंस रेट हम बढ़ाना शुरू कर देंगे तो एक तो मेरे पास मोर कंप्लायंट टैक्स पेयर्स आ रहे बढ़ेंगे, और दूसरा जब आपका शेयर बढ़ेगा तो मेरा टैक्स बढ़ेगा। तो जब कंप्लायंट का शेयर इन द मार्केट बढ़ता है तो मेरा रेवेन्यू बढ़ता है, जब उसका शेयर कम होता है तो मेरा रेवेन्यू। सो एक्चुअली मैं और आप तो एक ही साइड पे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसके आउट देयर इज अ स्पेस आउटसाइड दैट, जिसकी तरफ हमें, जिसमें से बहुत सारी इंटरवेंशन आपने देखी, बहुत सारी अली ने आपको नहीं दिखाई, इसलिए कि मुझे लगा था कि बीच में बोर हो रहे, अली को भी लगा होगा। तो लेकिन जैसे आप टेक्सटाइल है, स्पिनिंग है, उसमें 1.5 मिलियन बेल जो है वो अनअकाउंटेड फॉर है। स्पिनिंग के ऊपर जनवरी 31 तक, हमें जनवरी 31 तक ऑल कैमराज वुड बी इन प्लेस। मे बी जनवरी 31 की डेट है तो मार्च 31 तक हो जाएगी। पॉइंट इज वंस दे आर देयर, नो बेल वुड गो अनअकाउंटेड फॉर। जब ये 1.5 मिलियन बेल फैसलाबाद की सूतर मंडी के जरिए मार्केट में जाती है तो ये कंप्लायंट बिजनेसेस के लिए अनइवन स्पेस क्रिएट करती है। इसी तरह आपने शुगर का देखा है, सीमेंट का देखा है, बेवरेजेस का है, बाकी सेक्टर्स में अभी टाइल्स के ऊपर भी काम हो रहा है। सो वील गो, ये आपका वो स्लाइड होगी इधर अली, जो जिसमें आपने वो पूरे सेक्टर्स दिखाए हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल? अगर वो स्लाइड आप, वो जो आपकी एक सेक्टर वाली स्लाइड है जिसमें आप कर रहे हैं, तो हम टोटल क्या बात करें? हम कोई 1.5% ऑफ GDP की बात करें, ये सारे टैक्सेस खत्म करके, इससे ज्यादा नहीं है ये, एक्चुअली इससे कम। अगर आप सिर्फ सेल्स टैक्स की जो चोरी है, जो रफली अगर इसको जब आप इंप्लीमेंट कर दें तो वो आपकी तकरीबन रफली ये हो जाती है। तो वंस यू आर एबल टू प्लग इट, यू कैन ब्रिंग डाउन द रेट्स। अगर हम प्लग नहीं करेंगे तो बाकी हमारी फिस्कल कंस्ट्रेंट्स तो है ही है ना। सो मैं ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, पॉलिसी मेकिंग की बिल्डिंग एक और बोलादा हुकूमत ने बनाई है। हम फैसिलिटेट करते हैं पॉलिसी मेकर को कि जब में कंप्लायंस रेट हमारी टीम बढ़ाती है तो वहाँ पे उनके पास वो स्पेस क्रिएट होती है कि वो टैक्स रेट के ऊपर ना कोई बहस ही नहीं है कि ज़्यादा या कम, तो हर कोई मानता है कि ज़्यादा। आपने जिससे मिले होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले होंगे, मिनिस्टर फाइनेंस से मिले होंगे, मिनिस्टर इंडस्ट्री से मिले होंगे, किसी ने आपसे ये बहस नहीं की कि नहीं जी टैक्स रेट कम है। सब यही कहते हैं कि टैक्स रेट ज़्यादा है व्हेन यू कंपेयर इट, बट हाउ डू यू ब्रिंग इट डाउन? तो ट्रेडिशनली हम ये करते रहे हैं कि हम कंप्लायंस रेट को नहीं बढ़ाते रहे, जो ज़रूरतें बढ़ी हम रेट को बढ़ाते हैं, हमने उसको स्टॉप लगा दिया। अब रेट नहीं बढ़ेगा, अब रेट में कम होना, और उसका तरीका यही है कि आप कंप्लायंस रेट को बढ़ाएं। बाकी
سوال جواب تو نہیں ہوتے نا اس میں. وی آر اوپن فار اینی کوشچنس. کون ریگولیٹ کرے گا؟ کوئی ہے؟ مائک وائک دیں گے ادھر؟ اچھا حامد اور شکیل صاحب اور علی، یہ سارے سوال آپ لوگوں نے لینے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ نہیں آئے گا. سو اگر آپ نوٹس نہیں چاہتے تو حامد کو سوال نہیں کرنا. ویری پلیزنگ ٹو ہوگا کمپلائنس ناٹ بٹ بائی میکنگ تین میں آپ کا سوال سمجھ ہو کیا رہا تھا اس سے پہلے؟ یہ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹوٹل ہے نا ایک اسپیس ہے کہ اتنی ادھر ہوگی اتنی یہ ہوگی. یہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ایک سال میں یہ ساری ریلیف آ جائے گی یا ایک سال میں ساری انفورسمنٹ ہو جائے گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں. اس کی فیزنگ ہوگی. فیزنگ میں پریفرنس اس کی کوئی کیسکیڈنگ ہوگی، وہ یقیناً ہوگی. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ جو 600 بلین کی ابھی یہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ون آف دا بیسٹ ٹیکنالوجی مائنڈ ان دس کنٹری از ورکنگ آن دیٹ از سلمان اختر. وی از ممبر آف دا بورڈ ٹیکنالوجکس کے جو ہیں، آپ جانتے ہوں گے ان کو، اکثر لوگ جانتے ہوں گے. سلمان ایکچولی از ٹرائنگ ٹو کریٹ این آٹو ٹیکس آفس جس میں آپ کا بیچ کا یہ جو ٹیکس آفیسر کا رول ہے وہ بالکل منیمائز. جس طرح ہم نے فیس لیس کسٹمز میں کیا ہے، یو ول ہیو اے فیس لیس ٹیکس آفس. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا بٹ اس کی ارلیئر ورژن اس سال سے امپلیمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ جو امپاسبل ریٹرنز کی علی بات کر رہے تھے یا 600 بلین کی جس سے آپ نے بات کی، یہ سارا اس نظام پہ وہ لا رہے ہیں. مجھے وہ انہوں نے کل ایک ٹائم لائن دی تھی، میں ابھی آپ سے شیئر نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ذرا تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن وہ ٹائم لائن اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو مے بی اس سال کے اینڈ یا اگلے سال کے دسمبر تک ان ایئر اور سو ویل بی ایبل ٹو ٹیپ ہاف آف دیٹ اف ناٹ آل آف دیٹ. تو یہ والا پارٹ بھی ہے، یہ پروڈکشن مانیٹرنگ والا پارٹ بھی ہے، اور جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول پہ ویسے حامد کی ٹیم آلریڈی کام کر رہی ہے وہ بھی ہے. ہم نے اپنے افسروں کے انسینٹیو سٹرکچر بھی چینج کیے. آپ کو پتہ ہے کہ انکم ٹیکس کے ہر افسر کا اسیسمنٹ آرڈر جو علی نے تھوڑی سی بات کی اس کو رینڈملی سلیکٹ کیا جائے گا، کیا جا رہا ہے آلریڈی. پچھلے 2 سائیکل ہو چکے ہیں. اس میں اس سے 6 مہینے پہلے میں جتنے اسیسمنٹ آرڈر پاس کیے اس میں سے رینڈملی 10% سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور ایکسٹرنل پینل کو انونیمائز کر کے بھیجے جاتے ہیں اور اس کی کوالٹی پہ کمنٹری لی جاتی ہے. اٹس لائک کورٹ آرڈر کی طرح ہی ہوتا ہے تقریباً. وہ اس کا فیکٹس دینے ہیں، لا اپلائی کرنا وغیرہ، اور اس کی بنیاد پہ اس کا ریوارڈ سسٹم طے ہو رہا ہے. یہ جو ABCDE ہے، he could be an E if he passes a bad assessment order. Bad assessment order doesn't mean low revenue. A good assessment order might say at the end that there is no revenue liability for the taxpayer, but the order has to be reasoned. So اس کی کوالٹی کے اوپر وہ ساری بات ہے. تو وہ اس سائڈ پہ ہم ادھر بھی کام کر رہے ہیں اور ادھر بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ نا میں آپ کو بتاؤں یہ سال والا کام ہے نہیں. یہ جو آرگنائزیشنل سب کلچر چینج کرنا ہے نا، یا آپ کے اس طرح کی ٹرانسفارمیشن لانا جو ہے، یہ جنرلی میڈیم ٹرم والا کام ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب جب مل کے اس پہ کام کریں گے، اور اس وقت ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہے. سچی بات ہے، فیڈرل کیبنٹ، ادر انسٹیٹیوٹ. آپ کو پتہ ہے ٹوبیکو سیکٹر میں حامد کا میرے سے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے. حامد کہتا ہے کہ 100 بلین ہے، میرا خیال ہے 200 بلین کی ٹیکس چوری ہے، لیکن 100 اور 200 دونوں ہی بڑے نمبر ہیں. اس وقت کتنے حامد رینجرز کے جوان وہاں لگے ہوئے ہیں؟ 200. یعنی یہ ہمارے فورس نہیں ہے، 200 رینجرز کے لوگ اس وقت ڈپلائڈ ہیں GLTs کے اوپر. اور وجہ کیا تھی کہ ہمارے جو بندے جاتے تھے یہ مردان اور سوابی والے ایریے میں زیادہ، موسٹ آف یو نو دیٹ، کچھ 7 فیملیز ہیں ٹوٹل جو اسے رن کر رہی ہیں. پورے کا پورا یہ ٹوبیکو کا یہ لسٹڈ بزنس ہے جو ان ٹیکس بزنس ہے.
وہ ہمارے بندے جاتے تھے وہ یا ڈر جاتے تھے یا کمپرومائز ہو جاتے تھے, تو ہمیں ایکسٹرنل ریسورس لینا پڑا اور ہمیں وہ سپورٹ مل رہی ہے. سو وی آر گیٹنگ آل کائنڈ آف سپورٹ فرام آل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. اٹس کائنڈ آف ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ایز میڈم کائنڈ دا ٹرم. تو میڈم جب فائنانس منسٹر تھی تو ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کیم ان ٹو بینگ. تو وہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ جو ہے وہ اس میں ہمیں اویلیبل ہے, اس میں کیبنٹ کی بھی ہے, پوری ہمیں سپورٹ ہے. انشاءاللہ اگر ہم یہ 6-7 بڑے سیکٹرز میں یہ پلگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ جو سیلریڈ والے سے آپ لے رہے ہیں, سیلریڈ کا ریٹ, سیلریڈ سب سے کمپلائنٹ سیکٹر ہے, اس سے زیادہ کمپلائنٹ ہو نہیں سکتا نا, اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو سیلریڈ والے سے آپ کہیں کہ جی تو آپ سے 10% سرچارج بھی لینا ہے, آپ سے یہ ٹیکس ریٹ بھی لینا, وہ کچھ تو بنتی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایف بی آئی میں جو لوگ ہیں نا انہیں کوئی اذیت پسند لوگ ہیں, انہیں بہت خوشی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ایکچولی دکھی ہوتے ہیں, ہم روز یہ ڈسکس کرتے کہ بڑی جاتی ہے. پرابلم کیا تھی کہ وہ اگر کمپلائنس ریٹ اوپر نہیں جائے گا تو حکومت وقتاً انکریمنٹلی سپر ٹیکس, سرچارج یہ سارے لگاتے رہے, سی وی ٹی لگاتے رہے, جس کی بہت زیادہ ڈیفینڈ نہیں جسے کیا جا سکتا. لیکن لگا, اٹس این لیجسلیٹو انسٹرومنٹ, ٹوڈے اٹس اے ویلڈ لا. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری محنت کی جائے, اور ہے یہ محنت والا کام. آپ نے تو باہر بھی 2 سوال کیے تھے. پلیز گو ہیڈ. It's an observation or a comment. کل ایک conversation ہو رہی تھی, منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ جی ڈی پی کا 25% از ایگریکلچر, رائٹ, جو کہ کمپلیٹلی انٹیکسڈ ہے. تو جب میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ پی ایم کو بتاتے ہیں 18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو, تو ابھی آلریڈی ہم 14.5% پروونس والی سلائیڈ ہے تو ہم جسٹ ہیئر می آؤٹ ہوگی. اگر وہ So- لڑکا تو اسے کہیں لگا دو, میں آپ بات کریں. Yeah, so if 25% of GDP is untaxed or agriculture, تو جو آپ 10.8% اس کو ڈیوائڈ بائی 0.75 کریں تو ہم ویسے ہی 14.5% پہ کھڑے ہوئے ہیں. That's something which you should also keep in mind. And پھر اپنا 18% کا 14.5 ٹارگیٹ سے بھی نہیں کام ہوتا. جی 10.8 کو میں 0.7 سمجھ گیا ہوں آپ کی حضور بات, لیکن 14.5 دیکھیں آپ کے ایکسپینڈیچر ایبسولوٹ ویلیوز میں ہے نا, آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ پرسنٹیجز میں نہیں ہے یا ریشیو. نہیں, لیکن سر میرا صرف کہنا یہ ہے کہ وین یو کمپیئر اٹ ود ادر کنٹریز کہ یار اس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اتنا ہے, اس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اتنا ہے, تو کیپ ان مائنڈ کہ پاکستان میں 25% جی ڈی پی جو کہ ایگریکلچر پہ, اس پہ ٹیکس نہیں سر ہے. انڈیا میں بھی ہے نا ایگریکلچر, اور انڈیا میں بھی ایگریکلچر سے کوئی خاص ٹیکس نہیں آتا, ایسی بات نہیں ہے. لائف اسٹاک سر چھوٹا سیکٹر ہے, لائف اسٹاک سے آتا ہے ٹیکس, کم آتا ہے, یو نو, بٹ کرافٹ سیکٹر بیسیکلی از دا بگ. جی دیٹس کریکٹ. So whatever it is آپ ایکولائز اس طرح کر لیجیے گا. That was my only سر وہ comment. نا انڈیا, بنگلہ دیش جو ہمارے کمپیریبل کنٹریز ہیں ان میں ایگریکلچر سیکٹر از اے لارج سیکٹر, اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہاں ہے, لیکن وہ دوز ریشیوز آر ٹیکن کیئر آف. سر آئی ہیو اے کویسچن. جی جو بھی نان کمپلائنٹ ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ انوائسز کے تھرو جو ہے یو ول بی ایبل ٹو انشور کہ کتنا سیل کیا, اور جو پروڈکشن فیسلٹی پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کیمراز لگائیں گے اور سینسرز لگائیں گے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انشور کہ وہ کیمراز اور وہ سینسرز کو کسی طرح سے کیموفلیج نہیں کیا جائے گا, یا بیکاز اگین ول یو بی ڈپلوئنگ پیپل اوور دیئر ٹو انشور دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ دا وے یو وانٹ اٹ ٹو بی. اگر تو مجھ سے کوئی 1.5 سال پہلے یہ سوال پوچھا جاتا تو مجھے زیادہ پریشانی ہوتی. ہم یہ 1 سال سے نا شوگر سیکٹر میں امپلیمنٹ کر چکے ہیں. میرے کچھ دوست نا بسکٹ بناتے ہیں, ان کی بسکٹوں کی فیکٹری ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہر سال 2 طرح کی چینی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی تھی. ایک ٹیکس والی چینی آپ نے خریدنی ہے تو ٹیکس والی خرید رہے, بغیر ٹیکس والی خریدنی ہے تو بغیر. اس سال ایک ہی ریٹ تھا چینی کا, آپ کراچی, لاہور, کہیں سے بھی پتہ کریں. ہم نے اسے امپلیمنٹ کیا ہے, کیمروں کو کیا ہے, اس کے ساتھ جی پی یوز لگائے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمیں لائیو فیڈ آتی ہے. اور ہمارا جو ایس آر او ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 6 گھنٹے کسی اسمبلی لائن کے اوپر کیمرے کی فیڈ نہیں آئے گی تو وہ 6 مہینے میکسیمم کے اوپر کاؤنٹ ہوں گے. ایکچولی دا میل ہیز این انسینٹیو ٹو کیپ اٹ رننگ, لیکن ہم نے اس کا ایک نگرانی کا نظام بھی بنایا ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ اینڈ میں یہ 100% پروف ہو جائے گا, یہ 95% ایکوریسی پہ چلے تو آئی ایم اوکے ود دیٹ.
दोबारा बताएं। अच्छा चले, मैं समझ गया। देखिए वो ये कह रही हैं कि आपकी मैं समझ गया मैडम आपकी बात। मैडम मैं आपकी बात समझ गया। मैडम ये कह रही हैं कि जब आपको ये पता है तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे जो आपने FED वगैरह लगाई है वो नहीं लगानी चाहिए। आप ये कह रही हैं मैडम, मेरी अर्ज तो सुन लें, अर्ज तो सुन लें। मैडम ये कह रही हैं कि वो नहीं लगाती। हम तो आपसे सबसे पहले आके एडमिशन ये की है कि हमें टैक्स पॉलिसी वाली साइड पे और टैक्स रेट्स वाली साइड पे हमारा जो फेलियर है वो इस वजह से है कि हम कंप्लायंस रेट को ठीक नहीं कर सकते। ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हम उस जगह उसे हैंडल कर लेंगे जो इस साल हमने कर लिया है तो अगले फाइनेंशियल ईयर से प्रॉब्ली ये वहाँ नहीं लगना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड। चीफ साहब, मेरा सवाल सर्विस सेक्टर के बारे में है। PBC का एक पॉइंट ये भी है, वी शुड टैक्स प्रॉफिट्स एंड नॉट टैक्स। एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, जी। इजाजत देंगे। इधर से ना एक सवाल आया था एग्रीकल्चर के ऊपर, वो इम्पोर्टेंट एड्रेस करना। और आप सब लोग मतलब आप सब लोग ही बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। तो क्योंकि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स को भी मिलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर को भी मिलते हैं, तो आपको एक नेशनल रेवेन्यू पिक्चर भी आपके इल्म में होनी चाहिए। ये वो नेशनल रेवेन्यू पिक्चर है जिसकी हम बात करें। जो आपको नीचे येलो नजर आ रहा है ये FBR रेवेन्यू है, और जो आपको ऊपर वाली बार नजर आ रही है ये प्रोविंशियल रेवेन्यू। प्रोविंस को 3 इंपॉर्टेंट टैक्सेस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर है, एक GST ऑन सर्विसेज है और एक प्रॉपर्टी टैक्स। ये तीनों को मिला के प्रोविंसेस लास्ट ईयर जून 25 में वर कलेक्टिंग 0.85% ऑफ GDP। इसने 3% पे जाना। फेडरेशन वाज कलेक्टिंग 10.33% ऑफ GDP, इसने 13.85 पे जाना है। अगर आप सफर देखें तो प्रोविंसेस का थोड़ा सा लंबा सफर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इन वेरियस फोरा पे बात करते हैं तो ये आप प्रोविंशियल टैक्सेस के ऊपर ज़रूर बात करें। आपके पास अली वो स्लाइड होगी जिसमें हम मुख्तलिफ शहरों के प्रॉपर्टी टैक्सेस का कंपैरिजन है, लग जाएगी जी? इज इट इजी एंड क्विक? तो आप अगला क्वेश्चन। अच्छा सर, ये मेरा सर्विसेज पे ही था कि सर्विसेज हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है विच इज़ 50% प्लस, और उसमें हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। इवन अगर इनकम टैक्स पे भी देखें तो जो एनेक्डोट बताते हैं कि इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं या सेल्स टैक्स? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों इंटीग्रेटेड हैं। जैसे आपने यहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस लगा के आप अगर उनकी सेल्स पकड़ लेते हैं तो आप उनकी इनकम भी पकड़ लेंगे, वो तो आप फिर दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे। सीमेंट में अगर आपने गैप को कर दिया है फिल तो इस तरह कर दिया, बट सर्विसेज में इस तरह के गैप्स आप कैसे फिल कर पाएंगे? समझ गया। और अब जैसे मैं सर्विसेज में एक ऐड करना चाहूँगा पॉइंट। एक मिनट, सर्विसेज बात कर लें अगर इजाजत। हाँ, सर्विसेज में अब जैसे ये हाई नेटवर्थ, अब ये जो शादियाँ और सिलसिले बहुत सारे होते हैं, इस पे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। वो कॉटेज इंडस्ट्री की भी वॉल्यूम्स बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं, यू अंडरस्टैंड दैट, एक कपड़ा जो है मिलियन प्लस का बनता है, और बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। एक लाहौर में शादी हुई है, हम उसने उसके सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से तो आप थोड़ा करेंगे, बट इसका क्या तरीका है प्रॉपर्ली? सो ऐसे था कि आपका इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, मैंने ये एक्सपेंसेस किए, मैंने ये रेवेन्यू कमाया। अब हमने इस साल फाइनेंस बिल में ये एबिलिटी ले ली है, जो सेल्स टैक्स एक्ट में हमारे पास पहले भी थी और एक्साइज में भी थी, कि हम आपकी सेल को मॉनिटर कर सकें, नॉट फॉर पर्पज ऑफ कलेक्टिंग सेल्स टैक्स बट फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। तो इस दफ़ा अली हामिद, आपका सेक्शन कौन सा है जो अमेंड हुआ है? 175C ऐड हुआ है। 175C में अब वही इख्तियार हमारे पास आ गया। इस दफ़ा लाहौर में अब हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इस वक्त डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है। हमने ये वहाँ मतलब देखिए, ये बड़े बड़े जो हैं डॉक्टर्स हैं, लायर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये सब सिस्टम से बाहर थे, इनका कोई तरीका नहीं था। जो अच्छे लोग थे वो दे रहे थे, जाहिर है, जो अच्छे नहीं थे। बट मैं आपको मज़ीद बताऊं, लाहौर में सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं जिसमें डॉक्टर्स को पेमेंट चेक के जरिए की जाती थी। सिर्फ 2। एवरीबडी एल्स यूज्ड टू पे इन कैश। दे वुड रिसीव कैश, दे वुड पे इन कैश, एंड दे वुड अंडर रिपोर्ट इनकम। मेरे पास 1,50,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड है।
सिस्टम में, कभी ना कभी। हर साल सब नहीं रिटर्न फाइल करते। इस साल 56,000 ने अपनी रिटर्न फाइल की। 50,000 डॉक्टर्स की जो एवरेज एनुअल इनकम उन्होंने डिक्लेयर की है वो 20 लाख रुपया है। एवरेज एनुअल इनकम 20 लाख रुपया डिक्लेयर जी। नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए के करीब है, 1,55,000। मैं अभी तक किसी एक डॉक्टर को भी नहीं इस मुल्क में जानता, सवाई ये जो बच्चे ग्रेजुएट होके हाउस जॉब कर रहे होते, कि जो 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा हो। ये 20 लाख है। इसकी वजह क्या थी कि एवरीथिंग वाज बीइंग डन इन कैश। दिस इज फर्स्ट टाइम बिकॉज हमें जो लेजिस्लेचर ने एनेबल किया है कि अब हम डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के ऊपर जो उनके कलेक्शन पॉइंट है उसकी मॉनिटरिंग शुरू की है ये इंट्रूसिव। लेकिन आप क्या करें, एक मुआशरे में अगर झूठ का लेवल इतना बढ़ जाए, आप सोचें ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये कोई अनपढ़ आड़तिया नहीं है, ये कोई सूतन मंडी का आदमी नहीं है, इसलिए MBBS किया हुआ है। और उसके बाद कुछ कंसल्टेंट वगैरह भी होंगे, आप इनसे मिलते भी होंगे, हमारे दोस्तों में भी है। वो कहती है हमारी एवरेज इनकम, एनुअल इनकम 20 लाख। आप जस्ट थिंक ऑफ दिस, यू शडर। मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि इनकम टैक्स लॉ में आप लोगों की रिसीट की मॉनिटरिंग करें। सुलन ये नहीं होनी चाहिए, एक्साइज का कंसेप्ट है। बट जब इस लेवल का अंडर रिपोर्टिंग होगी तो आपके पास ऑप्शन भी क्या बचेगा। जी मैडम है इधर। जी अच्छा, ये जरा एक नजर देख लीजिएगा प्रोविंसेस वाली बात। ये मुख्तलिफ शहरों में एनुअल पर कैपिटा प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू ये सूबों ने कलेक्ट किया। वापस पिछली स्लाइड पे लाहौर 623 रुपीज, चंडीगढ़ 1276 रुपए, ये नॉर्मलाइज्ड है फर PKR में। दिल्ली 3,000 रुपया, बेंगलुरु 11,233। आप बेंगलुरु और कराची 111 रुपए। कराची का हाल बहुत खराब है ना, वो ठीक है भाई, उनके लिए ठीक है। वो किसका ख्याल है कि 111 ठीक है? वो पानी भी खुद पे करते हैं बेचारे। सर, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होगा तो पानी के लिए पे नहीं करना पड़ेगा ना। ये वो पैसे नहीं जो फेडरेशन को आने, ये सूबे के पास ही रहने हैं, सूबे का ओन रिसोर्स है, ये वही खर्च। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप, क्योंकि आप सब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और आप इंपॉर्टेंट लोगों से मिलते हैं, तो आप जब उनसे बात करें तो ये बात ज़रूर उनके नॉलेज में लाएं। ये सबमिशन तो की जा सकती है। आप लेफ्ट साइड पे मुल्कों के हिसाब से भी उसको देख सकते हैं। वेयर वी आर 0.08% ऑफ GDP एज प्रॉपर्टी टैक्स। 0.3-0.4 इज फाइन, दैट्स मोर नॉर्मल, बट 0.08 इज नॉट फाइन। आगे चलिएगा जरा, एक स्लाइड और दिखा दीजिए। नॉर्मलाइजिंग फॉर पर कैपिटा इनकम, ये तो पर कैपिटा था ना, पर कैपिटा इनकम के लिए अगर आप नॉर्मलाइज करें, अगली स्लाइड पे चलिए जो पहले आपने दिखाई। नॉर्मलाइजिंग फॉर पर कैपिटा इनकम दिल्ली और लाहौर में फिर भी ये ह्यूज डिफरेंस है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि NFC की बहस को छोड़ दें, वो एक अलग मामला है। सूबों के जिम्मे जो 3% है कलेक्ट करना, उसमें से 0.85 तो कलेक्ट नहीं होना चाहिए ना। चले वहाँ, इधर भी फेडरेशन में भी गैप्स हैं, वहाँ भी गैप्स होंगे, मुश्किल भी है, आसान नहीं। सूबों का काम ज़्यादा थोड़ा सा देखें, सर्विसेज सेक्टर में उतना आसान नहीं होता GST कलेक्ट करना जितना गुड सेक्टर में होता है। गुड सेक्टर इज मोर मॉनिटरेबल, मोर विजिबल, सर्विसेज आर लेस विजिबल बाय नेचर, लेस विजिबल। ठीक, इतना गैप नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कितना कलेक्ट करते हैं अली? 4-4 बिलियन दोनों करते हैं सूबे, बड़े सूबे जो हैं। तो आई रेस्ट माई केस। मैडम आप कुछ कहना चाह रही? मैडम इन द मिडल। जी आपको माइक ही नहीं दे रहे ना मैडम। जिलाफ कोई टाइम है ना जिसके बाद हमने खामोश होना? नहीं, हमारे लिए होना चाहिए ना। जी मैडम। जी, कल एक डिस्कशन हो रही थी, तो आई वांटेड टू पोज द सेम क्वेश्चन टू यू आल्सो।
आपका बड़ा पेन पॉइंट है कि लोग टैक्स की कंप्लायंस नहीं करते, लोगों का भी बड़ा पेन पॉइंट है कि वो जिस दिन कंप्लायंस पे आते हैं या आपके नेट पे आते हैं, आप फिर पिछले 5 से 8 साल तक उनके केसेस खोल देते हैं एंड देन दे हैव नो वे ऑफ एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान, मतलब बैंक्रप्सी इज़ द ओनली ऑप्शन. So this is my question to you. Have you thought about easing the way of compliance? Because for people specially के चाहे वो पढ़े लिखे लॉयर्स हों और डॉक्टर्स हों जिनकी आपने अभी बात की है, या बहुत अनपढ़ इंसान हो, they still need a path to becoming compliant. और अगर वो नहीं होंगे compliant तो हम जैसे लोग जो हैं we will never be able to have our taxes reduced. बताएं कि जब हमने कहा कि चले हम आपसे पिछला हिसाब नहीं लेंगे तो फिर लोगों ने क्या किया? इन पास आपने देखा होगा अयूब खान की स्कीम से लेके विच इज़ 1966 में जब वो SNFB वाली स्कीम आई थी, उससे लेके कंटिन्यूसली 2019 में आपने आखिरी एमनेस्टी स्कीम दी है. एंड वी हैव ऑफर्ड अगेन एंड अगेन. एंड 2018 और 2019 तो 2 कंटिन्यूस स्कीम्स आई हैं, उसमें भी 3 ट्रिलियन रिपोर्ट हुआ और अगले साल फिर 3 ट्रिलियन रिपोर्ट हो गया. तो इन एसेंस एक हैबिट, एक कल्चर ये बन चुका हुआ है कि विल कीप ऑन accumulating non-tax money unless जब तक एमनेस्टी ऑफर होगी तो हम ये कर लेंगे. सो होपफुली 19 से 25 कुछ नहीं हुआ एंड होपफुली अब हम आगे ये नहीं चलेंगे. बट अगेन दिस मे बी राइट इन द सेंस दैट लॉ में ये प्रोविजन है, बट ये ज़्यादा हिस्टोरिकल है. मेरे पास अभी इतनी कैपेसिटी ऑडिट की नहीं है कि आपके 5 साल ओपन कर दिए जाएं. सो जो ये एनेक्डोटल आप जो सुनते हैं चीज़ें, तो 10, 20, 25 साल पुरानी हिस्ट्री में चीज़ें पड़ी हुई हैं. माई 10 years last year 10 years audit is less than 1%, and you have to believe it. Most of you कभी ऑडिट के प्रोसीजर से इस कमरे में जो बैठे हुए लोग वो गुजरे नहीं होंगे. 122(5)(a) टाइप के जो आपको आते हैं कंपनियों को नोटिस वो अलग है, बट लार्ज टैक्स पेयर्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू ऑडिट. बट ऑब्वियसली वी आर इंस्टीट्यूशन जो 1924 में कायम हुआ था. सो जनरेशन पिछले दादा बता के मरते हैं कि इनकम टैक्स वाले ये करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली अब ये कर नहीं रहे. आपके सवाल की ना 2 डायमेंशंस हैं. एक डायमेंशन ये है कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि उनसे कहें कि पिछले सवाल नहीं पूछने. वो हमने आपको बता दिया, कई दफ़ा हम ये ट्राई कर चुके हैं. एंड इसका दुनिया भर में जो एकेडमिक लिटरेचर है वो कहता है कि एमनेस्टीज डू नॉट क्रिएट वर्क, दे ओनली क्रिएट मॉरल हैजर्ड. दे एक्चुअली इनकरेज यू टू बी डिविएंट इन फ्यूचर अगेन. ये इस पर कोई शक नहीं है. दूसरा पार्ट है कि क्या हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसे आसान बना सकते हैं. ये जितनी हम कोशिश कर रहे हैं कि अफसरों का थोड़ा इंटेग्रिटी लेवल बेहतर करें, उनका सब कल्चर बेहतर करें. हमने इस दफ़ा सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न कराई, कोई 6 क्लिक्स में भी हो सकती है इफ़ यू हैव अ नॉर्मल सैलरी. वो ये सारा उस तरफ एफर्ट है, ईज़ ऑफ इंटरेक्टिंग विद FBR. ये अभी जो FBR का प्राल का बोर्ड हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, वन ऑफ द बेस्ट SCV बोर्ड प्रॉबली. प्राइवेट सेक्टर से अभी हम सब मुझे बता रहे थे, इन्होंने CEOs के इंटरव्यू, आपकी 2 बड़ी टॉप प्राइवेट सेक्टर कंपनी के CEOs जो हैं वो इस वक्त शॉर्ट लिस्ट हुए हैं टू हेड प्राल. आइडिया इस कि वो जो अच्छे लोग हैं उनको हम लेके आएँ ताकि जो हमारा डिजिटल आर्म ऑफ द FBR है वो उस तरफ जाए. ये सारी एफर्ट हो रही है. बट ऑन द अदर हैंड सम हाउ ये कहना कि जी हमें मौका दे दें, हम पहले तो बुरे थे अब अच्छे हो जाएंगे, नहीं. And if I may add, from last 2 or 3 years, another institution has been added, which is called alternate dispute resolution, which is there only to protect businesses कि ये ख़त्म ना हो जाए, so that कि ये businesses ज़िंदा रहें. Even if कोई गड़बड़ हुई भी है, तो alternate dispute resolution, which is a type of arbitration headed by a high court judge, retired judge, और हमारा चीफ कमिश्नर बैठता है और एक आपका नॉमिनेटेड आदमी बैठता है. वो उसका काम ही ये है कि बिज़नेस को ख़त्म होने से बचाए. वी डोंट वांट कि ये मुर्गी जो सोने का अंडा देने वाली है इसको मार दिया जाए. सो दैट इज़ देयर. उसमें डिफर्मेंट्स भी हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रिमूव भी हुए हैं. जो ऑर्डर्स पिछले साल, इट गेव मी 80 बिलियन रुपीज़ पिछले साल के डिस्प्यूट्स हमने सेटल करके, जिनकी एक्चुअल वैल्यू 200 बिलियन रुपीज़ थी. सो वी गेव रिलैक्सेशन ऑफ 120 बिलियन. वी डिड नॉट डू इट, द judges and other people did it.
सो ये रास्ता भी मौजूद है, हम बिजनेस को कोई आदमी भी ख़त्म नहीं करना चाहता. सो अगर ऐसा कोई बात हो जाती है तो यू कैन ऑलवेज गो टू ADRC मैकेनिज्म एंड सेव योर बिजनेस एज वेल एज पे द टैक्स. पाकिस्तान कस्टम से सब कुछ लगते हैं. जी, मेरा एक सवाल है सर्विस इंडस्ट्री के बारे में. आपने जो अभी कमेंट किया ऑन द सर्विसेज इंडस्ट्री, वो आपने डॉक्टर्स एंड लॉयर्स के बारे में मेंशन किया, तो वो कनेक्टेड है विद देयर डिक्लेरेशन ऑफ इनकम. दूसरी तरफ एक सर्विस सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर है, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, IT सर्विसेज देता है. उनका जो इनकम टैक्स है दैट्स कनेक्टेड टू रेवेन्यू. So it's 4% of revenue or 29% of profit, whichever is higher. So इसके बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि FBR का क्या व्यू है to rationalize them कि not to tax revenue but to tax profit eventually? मूवमेंट तो उधर ही है. देखिए, ये जो सारी आपने डायरेक्शन देखी है, ये मूवमेंट उधर ही है. इवेंचुअली हमें ये ट्रांजैक्शन टैक्सेस से बाहर निकलना है, विदहोल्डिंग टैक्स को कम करना है. ये जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप रेवेन्यू पे 4% ले लेते हैं और फिर कहते हैं विच एवर इज लेस. ये इसलिए है कि हमारी कंप्लाइंस कराने की एबिलिटी बहुत लिमिटेड है, हमारी ऑडिट की एबिलिटी बहुत लिमिटेड है. अंडर डिक्लेरेशन का लेवल अभी मैंने आपको बताया किस टाइप का है. जब आप इनकम टैक्स में आप जाते हैं 29% रजीम में, तो एसेंशियली ये कह रहे हैं ना कि मैं ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है ये सारे का सारा, कि मैं आपकी रिटर्न को एक्सेप्ट कर लूँगा टिल आई हैव द एबिलिटी टू लुक एट इट. तो ये सारा उसी वजह से किया गया. मगर ये बात आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि जो ये एबिलिटी टैक्स ऑफिस की ऑटो टैक्स आना शुरू हो जाता है, वैसे भी ना अफसर या ऑडिटर अपॉइंट करके इतने बड़े लार्ज सिस्टम को देखा नहीं जा सकता. तो ये जो ऑटो टैक्स ऑफिस हम बना रहे हैं, ये बेसिकली एल्गोरिदम बन रहे हैं ना, जो उसको देखेंगे कि वाकई उसने जब अपना 29% पे किया तो सही फाइल किया. ये जो एबिलिटी क्रिएट होती जाएगी तो हमें ये रेवेन्यू बेस्ड कलेक्शन से बाहर आते हैं. इफ आई मे ऐड, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आ गया सर्विस सेक्टर पे. अगर आप अपना सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे देखें, 58% हमारी सर्विस सेक्टर है. होलसेल रिटेल ट्रेड इसमें से 18% जो है उसको आपको थोड़ा सा वो हमारे पास है, हम उसका टैक्स लेते हैं बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन होती है. उसमें 333 से इंक्रीज़ करके 622 बिलियन की टैक्स इस साल लिए गए, विच वाज द लार्जेस्ट पॉसिबल इंक्रीज़ जो एक साल के अंदर हमने रिटेल और होलसेल ट्रेड में लिए. ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज जो हैं उनको टैक्स एक अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से इनके ऊपर एक फिक्स मिनिमम टैक्स लगा हुआ है. सेम इसका अकोमोडेशन, फूड सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस. ये तो बैंकिंग 1400 बिलियन का प्रॉफिट पिछले दफा डिक्लेयर करके 600 बिलियन का मुझे टैक्स दे के गया. सो इट्स नॉट स्मॉल के जी सर्विस सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा. दैट इज़ वाई कि माई इनकम टैक्स इज़ 49% ऑफ टोटल रेवेन्यूज़. और सेल टैक्स का कलेक्शन जो था ये 6 ट्रिलियन मेरी इधर से आई है, तो 4 ट्रिलियन की सेल टैक्सेस से आई है, विच इज़ ऑन एसेंशियली अ टैक्स ऑन गुड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. हेंस ये है कि सर्विसेज सेक्टर इज़ नॉट इग्नोर्ड. IT का खुद वो आते हैं कि जी हमें आप इस फिक्स रजीम में रखें, वरना हम उनको नॉर्मल रजीम पे ले जाना चाह रहे थे. बट देयर इज़ एन एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट बिकॉज वी थिंक कि दिस इज़ द ओनली सेक्टर जहाँ से 15 से 20 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट आ सकती है. और अगर हम इनको ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो ऑलरेडी दे हैव मूव टू दुबई एंड जद्दा, और हर कंपनी ने अपनी अब IT कंपनी खोलनी शुरू कर दी है. अब इसका ये प्रॉब्लम की रीज़न यही है कि यू हैव टू बैलेंस दिस एक्ट कि हमने क्या एक्सपोर्ट्स वाले सेक्टर को ख़त्म कर देना है, या वी लेट देम फ्लरिश ऑन अ लोअर रेट फॉर सम टाइम. बट जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि फ्यूचर पाथ इज़ हर डॉलर के और हर टैक्स रुपी के ऊपर एक जैसी इनकम, वेदर किसी सोर्स से कमाया गया, IT से कमाया गया या मैन्युफैक्चरिंग से, एक जैसा होना चाहिए. मुझे सवाल तो आपसे पूछना नहीं चाहिए, but first, can you explain what is your tax regime for exporters? From my knowledge of theory as well as practical all over Asia, exports should not be taxed because they bring in foreign exchange earning, and also there has to be tax neutrality of the exports. Number one. Second, I remember there were a host of SROs that gave special exemptions to sector and people, और उसको revamp किया था. But I just wanted to get an update. Either it's been revamped or does it still exist, and what's its logic? And related to that, the tax expenditure
कॉस्ट कितनी है आपकी आजकल? थैंक यू. तीसरा और पहला सवाल मैं आपका लूँगा, दूसरा सवाल मुश्किल है, अहमद लेगा. तो इस साल की जो हमारी टैक्स एक्सपेंडिचर है वो 2.4 ट्रिलियन है, जो पिछले साल की हमने कैलकुलेट की है 2.4 ट्रिलियन. बट इसमें फार्मास्यूटिकल है, रॉ मटेरियल्स है वगैरह. एक्सपोर्टर तो पहला सवाल था, ये तीसरा सवाल जी, टैक्स एक्सपेंडिचर. तो टैक्स एक्सपेंडिचर 2.4 ट्रिलियन है जो पिछले साल की हमने रिपोर्ट फाइनलाइज की है, और इसमें से लार्जली वो सेक्टर दुनिया में हर जगह एग्जेम्प्ट है. मतलब इस 2.4 में से शायद 2.2 वो हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी फार्मास्यूटिकल है, दवाइयाँ हैं, उस तरह के सेक्टर्स हैं, आपके फूड आइटम्स है, फूड स्टफ्स है, जो रॉ फूड है वो है. सो वो वाला पार्ट है इसमें. जो आपका पहला सवाल था, देखिए इनकम किसी भी तरह की हो वो तो टैक्स होगी. मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस से इनकम कमाऊं या मैं लोकल सेल से कमाऊं, मैं इनकम अगर कमा रहा हूं तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं है कि अगर आप एक्सपोर्ट से जो इनकम कमाएंगे उस इनकम पे टैक्स नहीं होगा. हाँ, कुछ मुल्कों ने कंसेशन दी हुई हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये प्रिंसिपल दुरुस्त नहीं है कि मेरी इनकम का सोर्स अगर एक्सपोर्ट है तो फिर मेरे ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा. तो इस वक्त इनकम टैक्स ही लगा हुआ है. एक्सपोर्ट के ऊपर उस तरह का कोई सेल्स टैक्स या एक्साइज की ड्यूटी नहीं लगी हुई. वो एक कलेक्शन की है बात जिस पे बहस भी मौजूद है कि वो 2% लेते हैं, वो गलत है. हमारी अपनी ख्वाहिश ये है कि वो 2% नहीं होना चाहिए. ये पहले आपको पता है FTR में थे, अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में आए. FTR अच्छी रिजीम नहीं है. फाइनल टैक्स रिजीम, कोई जो भी टैक्स की थ्योरी आप समझती हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी देर तक वो रहे हैं. अब वो जब आए तो उसका एक मिनिमम प्लस वो विद होल्डिंग, उस पर बिल्कुल एक कंसेंसस है हमारा. उसमें हमारी अगर फिस्कल स्पेस होती तो शायद वो 2% से 1% पर इस दफ़ा आ जाता. हम नहीं ला सके, लेकिन हमारी फ्यूचर में डायरेक्शन ये है कि उसे कम करेंगे. बट है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम. But I thought that tax policy was now a subject of the Ministry of Finance, not है, of इस साल FBR. से होगा और अगले साल वही बनाएंगे. तो आप लोग इस तरह के टैक्सेस नहीं लगा सकते ना? हमने To industry or to exporters, it will have to be debated at the policy level because we need to promote exports. हम promote करेंगे exports को तो there will be foreign exchange and. मैडम आप क्या कह रही हैं कि जो इनकम एक्सपोर्ट से अर्न हो उस पे इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं कह रही हूँ कि एक्सपोर्ट्स पे कोई ऐसे ये जो सेल्स टैक्स और ये जो दूसरे हैं ये नहीं होने चाहिए. नहीं है इस वक्त सेल्स टैक्स. आई डोंट नो. सेल्स टैक्स इसलिए नहीं है कि वो कंजम्पशन टैक्स है ना. कंजम्पशन टैक्स तो कंजम्पशन ही दूसरे मुल्क में हो रही है तो कैसे होगा? बात ये है कि वो एक कलेक्शन करते हैं जो अभी फवाद साहब आपको ज्यादा दुख के साथ बयान करेंगे और दर्द के साथ बयान करेंगे. फवाद साहब बयान करें अपना दर्द. सर देखें, एक तो आप लेते हैं पैसे 6 महीने तक वापस नहीं देते. मैं दुख बता रहा हूँ अपना. दूसरे साहब इस पे अच्छा, आज इंक्वायरी जाके मार कर देंगे. मैं तो कागज लाया हूँ साथ. दूसरी बात यह है कि अब तो आपने रॉ मटेरियल पे भी टैक्स लगा दिया ना, यान पे भी लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट टू री एक्सपोर्ट, तो टैक्स तो है अब एक्सपोर्ट पे जो कि नहीं होना चाहिए. आपने फॉर द राइट रीजंस लगाई, उसमें आई मीन वो प्रॉब्लम्स थे वो थे, मगर वो आपका मैकेनिज्म टू मॉनिटर या टू गेट होल्ड ऑफ पीपल, आप पूरी इंडस्ट्री को तो सफर ना करवाएं ना उस पर. दिस इज व्हाट यू हैव डन, तो वो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट. जी जी जी. इनकम टैक्स की नहीं बात. मैं इनकम टैक्स देखें, इनकम टैक्स का एक मैकेनिज्म था वो आपने चेंज किया अभी, आई मीन FTR से उस पर चले गए. बात GST की हो रही है कि GST का मैकेनिज्म क्या है, आप कितना होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि वो एक इनपुट का मैकेनिज्म है कि 10% होगा, 12% होगा उसके बाद. सेकेंडली ये जो आपने अब लगा दिया है इसकी वजह से भी आई मीन इफ योर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज एक्सपेंसिव हियर और आप कहते हैं रॉ मटेरियल भी बाहर से ना ले तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे फिर? नहीं जरूर ले. अगर लोकल रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगेगा तो इम्पोर्टेड पे भी लगेगा. बात सिर्फ ये है कि वो कैश फ्लो का इशू वाकई जनरेट होता है. मैं उस बात से आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ. इतना EFS जब आई तो बहुत मिसयूज़ हुआ, और फवाद साहब दुरुस्त कह रहे कि मिसयूज़ का ये हल नहीं कि आप उसको बंद कर दें. मिसयूज़ का हल ये है कि आप उसकी मॉनिटरिंग बेहतर करें. अब वो ना मतलब मेरे जानने वाले लोग हैं, मेरे मतलब है, अब आपको केस कुछ यूज़ केस बताऊंगा तो आप मुझे कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बात यह है कि वो अच्छा नहीं लगता महफिल में नाम लेना. नहीं, जो ये रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट इन पे तो अगर ये एक्सपोर्ट के लिए हो रहे हैं इस्तेमाल तो इन पे तो कभी टैक्स होता नहीं है दूसरी कंट्रीज़ में. यू आर मेकिंग पाकिस्तान अनकम्पिटिटिव बाय डूइंग दैट. और ये मैं आपको बता दूं कि जो रिफंडिंग रिजीम है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, एटलीस्ट जो मैंने एनालाइज किया था. मैं एक्सपोर्टर्स के
بالکل I'm 100% behind the exporters. اس کی وجہ یہ ہے کہ we need foreign exchange earnings, اتنی ہماری liabilities ہیں. بٹ جو چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ it's a killer to have raw materials, intermediate products that go into export value addition to be taxed. I mean, کیونکہ دیکھیں نا, you are not making Pakistan competitive vis-a-vis our neighboring. نہیں, وہ bonded warehouse میں رکھوا دیں نا. یہ bonded warehouse scheme کس لیے تھی؟ میڈم میں آپ کو اس کے چلے جی, آپ ذرا بتائیں گے EFS کس طرح مس آپ لوگوں نے کچھ آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا اس وقت. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, آفٹر آل میں نے بھی بڑی انالیسس کی ہے پورے ایشیا کے ٹیکسیشن سسٹم اور آپ لوگوں کی بھی ٹیکسیشن سسٹم, اینڈ آئی ایم سیئنگ کہ ذرا آپ لوگ پلیز ری ایگزامن دس. یہ دیکھیں, میں آئی ایم ناٹ این ایکسپورٹر, سو آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز اور گین, بٹ آئی تھنک اٹ از اے نیشنل امپیریٹو that we allow exporters these it's not even a privilege or insight, you just want to give them, make them at par with the competitors. That's all I'm saying. Your observation is noted, madam. سر اجازت ہے, میں شکیل ہے. میڈم یہ کہہ رہی تھی کہ ٹیکسز ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے اصل میں. اچھا سر, میں ایک سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو کسی نے نہیں کی. کون جواب دے رہا ہے؟ سر شکیل ایئر ممبر کسٹم, ویری شارٹ سر, 30 سیکنڈس. سر میڈم کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو را مٹیریلز ایکسپورٹ میں یوز ہوتے ہیں یہی پرنسپل دنیا میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے. EFS ایک پرٹیکولر اسکیم تھی جس میں آئٹمس مس یوز ہو رہے تھے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ان را مٹیریل پہ اب وہ ٹیکس کے اوپر EFS میں آ رہے ہیں تو اس کا ریفنڈ نہیں ہوگا. ریفنڈ کی اسکیم وہیں پہ ہے, ریبیٹ کی اسکیم بھی وہیں پہ ہے. صرف EFS کی اسکیم میں چند آئٹم وچ ور پرون ٹو مس یوز ان کو نکالا گیا ہے. باقی ان ریفنڈ اور ریبیٹ کی اسکیمز کے اندر جو پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں تیز کرنے کے پروسیس کو, آلریڈی اس پہ بھی کام ہوا ہے. فرام ایئرز اٹ ہیز کم ٹو لیس دین منتھ ان سرٹن کیسز, فردر بھی ہونا چاہیے. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے 2 days بیک ایک میڈم سرچارج تھا جو آپ کو بھی یاد ہوگا 0.2% لگتا تھا EDF, اس کو پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا ٹو ڈو اوے ود اٹ, تو اس کو ختم کر رہے ہیں. آج سمری اس کی شاید آج کل میں موو ہو جائے گی. سو فار ایکسپورٹرز دیٹ ایڈیشنل لیوی وچ واز دیئر دیٹ از بینگ ڈن اوے ود ایز ویل. The 90% or 95% of the compliant people, just for the sake of 5 or 10%, you are tinkering with a scheme which was really in the interest of the exporters. So I personally thought, میں جب اسٹیٹ بینک میں آیا تو ہمارے جو SROs نکلتے تھے اس کا میں بیسس پوچھتا تھا. وہ کہتے ہیں جی اس میں اتنی چوری ہو گئی, اتنی چوری. کتنے لوگوں نے چوری کی؟ 5% نے, 10% نے. میں نے کہا جو 90% ہیں ان کو بھی تم چور بنا رہے ہو. So I think compliance جو ہے, that I think is the only important thing. So I congratulate you and Shakil کہ you have come up with the export facilitation scheme which I have been saying for the last so many years. Make life easy for them, and therefore because you have a comparative economy in a global environment, so you have to care for them. They are your earners of the foreign exchange, as Shamshad نے کہا, and we have to pamper them. And pamper them in the right way, not in the wrong way. اگر اجازت ہو, الماس بھائی آپ بات کر لیجیے پہلے, آپ کافی دیر سے. سر وہ نیکسٹ میٹنگ کا آ گیا ہے. اچھا جی, آخری سوال. ایسے تو نہیں جانے دیں گے. انجینئرنگ کے بارے میں بات بہت کم ہوتی ہے, اور انجینئرنگ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. وہاں سے وزیر آباد سے شروع ہو جائیں, گجرات, گجرانوالہ, سیالکوٹ, لاہور, یہ سارا علاقہ جو ہے چھوٹے چھوٹے SMEs ہیں جو کام کرتے ہیں. انجینئرنگ کے اندر اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز ٹیکسٹائل, اور اٹس ناٹ ایز سمپل ایز میکنگ اے فوڈ پروڈکٹ. اس کے اندر ویلیو چین کے اندر 18 اسٹیپس ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ہر اسٹیپ کے اوپر اگر جب وہ سیل ٹیکس چارج ہونا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ جو زیادہ تر جو ڈیلر ہیں یا دکاندار ہیں وہ سیل ٹیکس نہیں دیتے ہیں یا سیل ٹیکس کی رسید نہیں دیتے ہیں.
So one of the reasons why that whole area is incompetitive and we cannot export from there, जो बड़ी बड़ी चंद कंपनियां वो एक्सपोर्ट करती हैं, कोई पंप्स करती है, कोई बर्तन करती है, कुछ और करती है, लेकिन 90% लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो वहाँ पे दरमियान में जब ब्रेक आता है तो उसको एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, तो वो अगले एंड के ऊपर वो जो प्राइस में ऐड हो चुका होता है एंड थिंग्स गो रॉन्ग. आई थिंक वी शुड हैव अ वेरी डिफरेंट रिजीम फॉर कंपनीज लाइक दीज कि ये जब एक्सपोर्ट करने लगे तो उनकी एडजस्टमेंट्स का कोई रास्ता निकालना चाहिए. आई कांट फिगर आउट एनीथिंग, बट आई वुड लाइक टू लीव इट ऑन टेबल. सो आई थिंक वी नीड टू, हाँ, राइट सर, राइट. सर मुझे इजाज़त दीजिएगा, एक सवाल बस आखिरी मैं पूछना चाहता हूँ. स्टीफान डेरकॉन साहब से एक मुकालमा हुआ तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने कुछ जवाब दिए. बुनियादी तौर पे उनका जो मुकदमा है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जो हमारे मुकाबले के ममालिक हैं उनसे बहुत पीछे रह गया, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो नहीं हुई, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं हुई, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर हैं उनका जो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, और उसकी वजह से उनकी कीमत बढ़ जाती है और लिहाजा वो कंपेटिटिव नहीं रहते. ये उनका मुकदमा है. मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि क्या आपको एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के बारे में मालूम है? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, गर्दन हिलाई. फिर डॉक्टर एजाज नबी साहब दरमियान में आए और उन्होंने ये फरमाया कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का प्रॉब्लम ये है कि उसको छोटे एक्सपोर्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको सही किया जाए, रादर दैन चेंजिंग द एंटायर टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर द होल ऑफ द इंडस्ट्री. सो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता था, मैं आपसे सवाल सर ये पूछना चाहता था कि ये जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी आ गई है उसमें जो टैरिफ्स के स्लैब हैं वो भी नीचे जाएंगे. यकीनन डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक सर्टन बहुत बड़े टर्मोइल से गुजरेगी, मगर एफबीआर के जो रेवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और आप क्या समझते हैं कि एफबीआर अपने इन मेजर्स से उस लॉस को रिकूपरेट कर लेगा? और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये समझ रहे थे कि ये आखिरी सेशन मार धाड़ से भरपूर होगा, लेकिन आपने अपने अंदाज से इसको बहुत पुरलुत्फ बना दिया. सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सर हमें जो अभी 4-5 महीने का डेटा है उसमें तो कोई टैरिफ की वजह से लॉसेज एज सच नहीं आए, लेकिन अभी द ईयर इज स्टिल टू गो, सो लेट्स सी कि क्या होता है. बट इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी. वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप फरमा रहे हैं, जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मौजूद है. बट टैरिफ, हाई टैरिफ वॉल का जो आर्गूमेंट है वो नहीं सेल हुआ उस सारी डिबेट के अंदर, और इवेंचुअली हमने टैरिफ नीचे किए, और हमें ये कहा गया कि आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा, लेकिन हमने कहा अगर मुल्क के लिए अच्छा है और कुछ शॉर्टफॉल आता है तो इट्स ओके. असल में चेयरमैन साहब बात यह है कि जो टैरिफ्स नीचे किए गए हैं और उनकी जो बुनियाद है उस मुकदमे की, वो हमें समझ नहीं आती कि अगर आप टैरिफ को ज़ीरो कर दें पूरे मुल्क के लिए तो एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ जाएगी. उसका जवाब ये दिया जाता है कि जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स को डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन मिलेगा तो वो मजबूर होकर दूसरे मुल्कों में भागेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे. लेकिन मेरी इसका ये जवाब नहीं है. जवाब ये दिया जाता है कि जब आपको अपनी इनएफिशिएंसी का डेल्टा टैरिफ की वाल के नीचे नहीं छुपेगा तो आप एफिशिएंट होंगे, और जब एफिशिएंट होंगे तो विद इन द कंट्री आप एफिशिएंट नहीं होंगे, आप विज़ द ग्लोब भी एफिशिएंट. असल में मेरा इसमें एक वो डिबेट नहीं करना. नहीं, मैं डिबेट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसेस है उसमें एक बायर होता है और एक सेलर होता है. पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि दुनिया का कोई बायर पाकिस्तान से आके फैक्ट्री को विजिट तो कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर रीजंस. लिहाजा हमारे लिए वो सुरखाब के पर तो हमें लगे हुए नहीं है. सेम चीज़ उसको कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से मिल जाती है. सो मसाइल कुछ और भी हैं, शायद टैरिफ वाहिद मसला और इनएफिशिएंसी मसला नहीं है. बहुत शुक्रिया.